On the dais, off the dais, I would like to welcome Professor Kamini Dhimanji, Dr. Sarang Ingleji, Dr. Janinji ji. All are really expert of Ayurveda and particularly the subject Sharir Rachana. Sharir Rachana is the dominant today in male reproductive system. Then physiology will also come. A series of great experiences, knowledge sharing. Because Ayurveda has a myth that seniors are not interested to share the knowledge. And really, you all experts have supported me by negating this myth, by sharing your valuable experiences, knowledge, and everything desired for the society and AYUSH practice. Thank you. Thank you very much. Thank you all again. And I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for his initial welcome address. Rambir sir, namaskar. Swagatam. Dhanyavad, Professor Pawan Sharmaji. I also extend my heartiest welcome to all the guest speakers and the dignitaries who have joined this webinar today evening. And also persons, those who are viewing this whole process through YouTube TV as a live telecast. So as Professor Pawan Sharma told that we are having this typical series, of course, having so many questions in everybody's mind, but to have a shy face or there is some hesitation to discuss or to deal with. But here we are, the academicians are supposed to put forward each and everything which is belong to the healthy life or belong to the human being, irrespective of the system of it may be respiratory system or it may be urogenital system. So here we are blessed with Professor Kamini Dhimanji and her whole team. And here today they are going to discuss for the male reproductive system with the view that what is its anatomical aspects and how it runs as far as the physiology terms are concerned. Because it is the real hetu, it is the real tool or means management given by God to go for the next generation. So though we are, the persons are coming from anatomy department or Sharir Rachana department, that we are going to listen for the interest of the living persons, that how this reproductive system and the disease and disorders are going to be discussed on this platform. So thank you so much. And again, I welcome all the dignitaries of today's webinar. Thank you. Namaskar. बहुत बहुत आभार अग्निहोत्री सर आपका। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और ये सूचना करने में भी संतोष प्रकट करता हूं कि ये केवल एकमात्र प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कोई भी छुट्टियां सेलिब्रेट करने में या नॉलेज शेयरिंग करने में ज्यादा विश्वास रखता है। 4 साल में 1770 और पिछले 1 साल में 800 से ज्यादा वेबिनार हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है आप लोगों के आशीर्वाद को चाहने का। मैं मानसरोवर के मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देता हूं कि इतनी शांति की नौकरी है शाम को कि मुझे डिस्टरबेंस नहीं है और मैं रेगुलर कर रहा हूं वेबिनार 2 कभी 3। और आज तो मैं बेंगलोर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी श्री श्री कॉलेज में विजिट करके आया हूं। बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय कामिनी मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों के लिए। कामिनी जी नमस्कार। जी नमस्कार टू ऑल। पवन सर, अग्निहोत्री सर नमस्कार। रामवीर सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। And I'm very much thankful to both the speakers, Dr. Sarang, Dr. Janit. They consented just after only one message and one call. They agreed to attend or to deliver a lecture on this topic. And it was really pleasure for me that we are starting the infertility webinar series. And as when couple come to us for treatment of infertility, we always tell that we have to treat a male partner first.
in that view, we decided to discuss first of all male infertility. And when fertility or infertility both are concerned, we have to understand the anatomy as well as physiology. Otherwise, without understanding anatomy, without understanding physiology, we cannot understand pathology. So, in view of that, we decided this is a first lecture in that series. So, we decided to have the applied aspect understanding of reproductive system of the male, so that we can understand further pathologies why the couple is not able to conceive. So, I would like to thank all the participants also. They will join. They are joining, and some more will join in this webinar today also. To have the knowledge feast from both the speakers, our participants will be enlightened, and we are also thankful to both of them. So first of all, I would like to invite Dr. Ingle for his speech. Welcome, sir. Dr. Sarang. Thank you, ma'am. Thank you for the invitation. And just also I thankful to the organizer to give me a chance. Your video is not on, doctor. Okay, sir. Right now, sir, video is on. Great. Yes. Nice to see. Yes. Thank Nice you, sir. to Thank see. you. Nice to see Actually, you. I am also in the home, sir. That's why I'm not. The video is not on. Yeah. Okay, ma'am. Now we start with my lecture, sir. That is the topic of this just concerned webinar is the infertility aspects. Okay, so that's why the first we have to show the what is the infertility in the male. Male infertility is generally related also with the anatomical aspects of all that system, and infertility that is related infertility that is means that that is not non-ability to conceive that partner. Okay, that's why in case of male infertility, that this sperm which is in the form in that system is called as the male reproductive system. Okay, then the male reproductive system generally consists of the majorly two aspects. Functionally, it is made up for the formation, maturation, production, transport of the sperm from the testis to the urethral orifice. Okay, that's why the male reproductive system is generally divided into generally two parts that are which can be seen on the external aspect and which can be seen in the internal aspect. The You can external share aspect, presentation if you have. sir, actually, I am traveling now from Delhi to Nagpur today morning. No So problem. that way I Take have time. not make the presentation. No I problem. just asked the ma'am also that we have not take the presentation. No problem. Welcome. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके सर, तो जनरली आपको बताया गया था कि जनरली दो टाइप के ऑर्गन्स आपके मेनली होते हैं मेल इनफर्टिलिटी। आप जब ट्रीट करते हो कोई भी इसमें, तो आपको सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है सर, वो जनरली जो पार्टिसिपेंट है सबको शायद पता भी होगा कि जनरली जो ऑर्गन्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो जो अदर ऑर्गन्स आपको एक्सटर्नली मेल्स में सीन होते हैं, दैट आर कॉल्ड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो इंटरनली सिचुएटेड होते हैं एंड दैट आर कॉल्ड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। अनलाइक ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉमनली जो मेल गोनॉड्स होते हैं दे आर लाइज आउटसाइड द बॉडी। व्हाई इट इज प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज बिकॉज द स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स है और मैच्योरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, उस प्रोसेस के लिए बॉडी टेम्परेचर हमेशा आपका लोअर चाहिए। जो आपने आयुर्वेद में भी कहा है कि शुक्र आपका सौम्य होता है, तो ये सौम्यता इसी हिसाब से आप मैच आउट कर सकते हो कि सौम्यता है तो दैट मीन्स वहां पे अग्नि का ज्यादा प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए, तो दैट वाई बॉडी टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। तो दैट वाई नेचर ने वो शुक्र की सौम्यता एनहांस करने के लिए जो मेल गोनाइड होता है उसको आउटसाइड रखा है, बॉडी के आउटसाइड। तो दैट एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होंगे बॉडी के, जो आपको मिलते हैं, वो आपके तीन टाइप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है दैट इज द मेल गोनॉइड, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो एक आपकी सैक, फाइब्रोमस्कुलर सैक में सिचुएटेड होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, जो मैच्योर स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है,
उसके लिए बॉडी टेम्परेचर आपका लो चाहिए। तो लो करने के लिए टेस्टिस एक सैक में हैंग होता है एंड दैट इज कॉल्ड योर स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होती है वो फाइब्रोमस्कुलर सैक होती है आपकी, और वहां पे एक स्पेशल टाइप की मसल होती है जो उस सैक का टेम्परेचर थोड़ा सा लो करके रखती है, एंड दैट इज मसल इज कॉल्ड एज द डार्टोस मसल। And because of that dartos muscle, the temperature of the sac is low, and that's why the reason it increases the enhancement of the testis temperature also. Then जो second organ होता है जो इस scrotum के अंदर आपका मिलेगा, that are called your male gonoid, and that is called your testis. Testis जो होता है it is like a oval shape में आपका present रहेगा। दो testis होते हैं आपके right and left. Left side का testis थोड़ा सा lower side में होता है because of the direction of the lower spermatic cord. टेस्टिस जो होता है उसका अगर आपने हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा है, अंदर उसको कट करके देखा, तो उसके न्यूमरस आपके 200 to 300 ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, एंड दैट कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सर इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और ट्रांसलेशन है, कुछ कंट्रोल होता है तो उसी से, और एक और हार्मोन भी क्रिएट करता है वो ग्लैंड में भी आपको, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, तो आपका मेल सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करते रहते हैं। तो इस टेस्टिस जो मेन फंक्शनल एस्पेक्ट होता है वो होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दे आर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पूरे स्पर्म के जो मैच्योरेशन होते हैं उसमें टाइप के आपको स्पर्म मिल जाएंगे, इमैच्योर टू द मैच्योर फॉर्म। जब ये मैच्योर फॉर्म में होते हैं तो बिफोर इजैकुलेशन बॉडी एक जगह पे उसको स्टोर करती है थोड़ी देर के लिए, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है टेस्टिस के पोस्टेरियर और अपर एंड में आपका सिचुएटेड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, और इसी एपिडिडाइमिस से आगे का पार्ट आपका शुरू होता है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनना शुरू हो गया है आपका, वो जाएगा आपका एपिडिडाइमिस में फॉर द स्टोर पर्पस। बाद में जब कभी भी कोपुलेशन की प्रोसेस होगी तो इजैकुलेशन प्रोसेस के लिए वो एक लॉन्ग ट्यूब से होते हुए जाता है, एंड दैट लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड द वास। ये जो वास डिफरेंस होती है ये अलोंग विद द टेस्टिकुलर वेन और टेस्टिकुलर आर्टरी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में कवर अप होती है, एंड दैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो आपके स्पर्म के अपर एंड में आपको एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के इसलिए 3 स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। वास डिफरेंस का जो आधा पार्ट होता है आपका मेन पार्ट वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में होगा, बाकी का पार्ट आपका इंटरनली मिलता है। तो दैट वाई वास डिफरेंस जो होगा वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बोथ में कवर अप होगा। ये जो वास होती है ये आपके 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब हो गया, ठीक है। उसका एकमात्र काम जो है, जो स्पर्म आपके मैच्योर हो गए वो पहले एक स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाना है, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो जाके पहुंच जाते। लेकिन अभी भी ये स्पर्म इतने ज्यादा कॉम्पिटेबल नहीं है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सस्टेन कर पाए। इसके लिए ह्यूमन नेचर ने क्या कर दिया है, कुछ और स्ट्रक्चर को एड ऑन कर दिया इस स्पर्म में, और एक स्ट्रक्चर आपका बन गया है दैट इज कॉल्ड सीमेन। इस सीमेन में मैच्योर स्पर्म्स भी होंगे, ओके, और वो स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको एनर्जी प्रदान करने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सस्टेन करने के लिए और कुछ स्ट्रक्चर उसमें एड ऑन कर दिए जो सीमेन के काम में आते हैं। उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है लैडर के आपके अपेक्स के पोस्टर एस्पेक्ट में होगा। ये भी आपका एक स्ट्रक्चर होता है। सेमानल वेसिकल से एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड सेमानल डक्ट। सेमानल डक्ट सीमेन में आपका एक टाइप का स्ट्रक्चर मिलाता है दैट इज योर फ्रुक्टोज। वो फ्रुक्टोज आपका जो स्पर्म होता है उसको एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि स्पर्म जो होगा वो वजाइना में एंटर होगा,
वजाना से उसको फैलोपियन ट्यूब तक जाना है अगर उसको मैच्योर करना है तो, या फर्टिलाइजेशन करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है उस एनर्जी को प्रदान करने के लिए एक टाइप का स्ट्रक्चर वो सीमेन में ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोम। और वो सेमानस डक्ट, सेमानल से एक डक्ट आती है दैट इज कॉल्ड सेमानस डक्ट, और वो और वास डिफरेंस मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में और एक स्ट्रक्चर ऐड होता है, कुछ और स्ट्रक्चर जो और ऑर्गन से ऐड होंगे, उसमें से आता है मेनली आता है मेल में, दैट इज योर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट भी एक टाइप की ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर, वो भी आपका सिक्रीशन सीमेन में डालता है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर डालने के लिए तीसरा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इट इज आल्सो कॉल्ड द काउपर्स ग्लैंड, वो भी आपका एक टाइप का सिक्रीशन डालता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो एसिडिटी होती है उस एसिडिटी से स्पर्म को बचाने का काम करता है। यहां से होती है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होंगी यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जो रहता है इन केस ऑफ मेल, ये भी आपका एक्सटर्नल, आपको एक एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में दिखता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेनिस। पेनिस जो होता है ह्यूमन बॉडी में इन केस ऑफ मेल दो टाइप के फंक्शन सर्व करता है। एक टाइप का जो फंक्शन होता है वो होता है आपका यूरिनेशन का लिए थ्रू द यूरेथ्रा, और दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है आपका इजैकुलेशन का। जो अभी मैंने आपको ट्रैक बोली है उस ट्रैक से होते हुए इजैकुलेटरी ट्रैक इस मेल यूरेथ्रा में स्पर्म पोर करता है, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। लेकिन ये इजैकुलेशन करने के लिए पेनिस का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। नॉर्मल स्टेट में जो पेनिस होता है आपका दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड स्टेट। ओके, फ्लैसिड स्टेट में जनरली इरेक्शन या ऑर्गेनिज्म करने के लिए वो कैपेबल नहीं होता। ऑर्गेनिज्म करने के लिए जो कैपेबल होता है वो होता है आपका इरेक्ट स्टेट, एंड फॉर द इरेक्ट स्टेज मेंटेन करने के लिए इस जो पेनिस होता है, पेनिस में मेनली पेनिस जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज द पेनिस व्हिच इज अटैच्ड टू द ह्यूमन बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द पेनिस। रूट ऑफ द पेनिस में आपके मेनली दो स्ट्रक्चर आपको मिलते, दो साइड में और एक बीच में। दो साइड में जो स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कवर्ड विद द वन मसल दैट इज कॉल्ड द इशियो कैवर्नस मसल, वो इशियम बोन से लगी होती हुए और एक उस रूट ऑफ द पेनिस को आपका अटैच करते। और जो बीच में का पार्ट होता है रूट ऑफ द पेनिस का, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कवर्ड विद वन मसल दैट इज कॉल्ड बल्बोस स्पॉन्जियोनेसिस। This bulbous spongionisis is very important for the maintenance of the erection purpose. और बाकी ये जो तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो रूट ऑफ द पेनिस में आपको प्रेजेंट मिलेंगे, वही स्ट्रक्चर तीन आगे चल के जो फ्री पार्ट होता है पेनिस का दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ पेनिस। इन बॉडी ऑफ पेनिस में इन तीनों ही पार्ट का एक्सटेंशन मिलेगा आपको, और उनके नाम थोड़े बदल जाएंगे। जो दोनों साइड में होंगे दैट आर कॉल्ड कॉर्पस। अब जो शब्द आता है जनरली वो उनका वॉइस क्लियर नहीं है डॉक्टर साहब। हेलो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका। मैं बाहर होके बैठा हूँ। हाँ, वॉइस नहीं आ रहा क्लियर। अभी आ रहा है? हेलो हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, थोड़ा क्लियर है। हरी आवाज। हाँ, थोड़ा यहाँ पे मैं बारिश का प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा नेटवर्क इशू आ अच्छा रहा है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी आ रहा है मैं मामा। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, तो जो मैं आपको बता रहा था अभी कि दैट जो कॉर्पस जो रूट ऑफ द पेनिस से एक जो स्ट्रक्चर आता है जो आगे चल के बॉडी ऑफ द पेनिस में आता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कॉर्पस कैवर्नोसम। आप थोड़ा Okay. वीडियो ऑफ करके बोले तो ज्यादा मुझे लगता आवाज आएगी। ओके मैम, ठीक है। हाँ ओके मैम, हाँ अभी आ रहा है? हाँ, अभी क्लियर है। ओके, ठीक है, थैंक यू हाँ, सॉरी थोड़ा फॉर नेटवर्क इश्यू होगा ना। हाँ नहीं, एक्चुअली बारिश है ना मैम, तो दैट्स व्हाई वो नेटवर्क इशू थोड़ा ज्यादा आ रहा है। हाँ 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 हाँ, हाँ। ओके। तो जो मैं आपको बताने जा रहा था कि दैट जो रूट ऑफ द पेनिस से जो आगे तीन स्ट्रक्चर आते हैं जो इरेक्शन मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं, दैट इज द दो मेन स्ट्रक्चर है दैट आर कॉल्ड कॉर्पस कैवर्नोस।
इस कॉर्पस कैवर्नोजा में एक आपकी कॉइल्ड आर्टरी के वजह से इरेक्शन मेंटेन होता है. दैट आर्टरीज आर कॉल्ड एज द हेलिसिलीन आर्टरी, जो आपकी डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस की ब्रांचेस है. इन्हीं आर्टरी की वजह से आर्टरी का ब्लड इस कॉर्पस कैवर्नोजा में आएगा और वो इरेक्शन मेंटेन करेगा. दो कॉर्पस कैवर्नोजा के बीच में एक स्ट्रक्चर जो आएगा दैट इज कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसस. ओके, इन तीनों स्ट्रक्चर जब कभी इजैकुलेशन या ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस में इरेक्ट हो जाते हैं एंड दैट मेंटेन द इरेक्शन. इरेक्शन जो होता है वो जनरली आपका वस्कुलर फिनोमिना है which is under control of nervous structure. Okay, and that all is the then brief aspects of the human anatomy of the male reproductive system. मैम अभी सर को आगे कुछ बोलना है इसके पहले, जो दूसरे स्पीकर है उनको अगर कुछ हो. है प्रेजेंटेशन है. हाँ हाँ ठीक है मैम, तो वो क्लिनिकल एस्पेक्ट भी सर बता देंगे थोड़ा सा. हाँ 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 हाँ. ठीक है, ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. Okay. Now I would like to invite Dr. Janet. Dr. Janet? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yeah, you can share your PPT and can deliver your lecture now. Yeah, Okay. welcome you on Thank you, this madam. platform. Yeah. Thank you, Kamini ma'am, and thank you, Pawan sir, for giving this opportunity to present this lecture on the male reproductive system. So I'll share my screen. The screen is visible. Yes, visible. Is it full screen, ma'am? No. Yes, full screen. Yeah. Okay, so Nilesh, so Sarang sir has given us a brief introduction. He has given introduction about the anatomy of the male reproductive system. So topic given for me is the applied anatomy of the male reproductive system, and strictly restricting to the infertility. So what is infertility? So infertility in a man can result from deficiencies in sperm formation, concentration, or transportation. So these are the main reasons for the infertility in man. So as sir has mentioned, so the sperm formation, concentration, these are functions of testis and epididymis, and we have a large tract, the ductus deferens, the ejaculatory duct. All these consist of for the transportation of the sperm. So we can generally classify the causes into three. The first one is pre-testicular, second one is testicular, and third one is post-testicular. The pre-testicular includes the congenital or acquired disorders of hypothalamus, pituitary gland, or the related structures. So we are not going to focus into that part, but we are going to focus is on the anatomy which is related to the male reproductive system, the testicular part and the post-testicular part. So the post-testicular part, it can be chromosomal and non-chromosomal in nature, and the post-testicular, this includes a problem with the transportation of the sperm. So this can be either congenital or acquired. So first we will move into the testicular part. So sir has already mentioned the anatomy. I will just go through the images quickly. So it includes the testis, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate, male urethra, penis, and scrotum. Sir has already elaborated the functions of each structure. So we'll start with the testis. So as the measurements sir has mentioned, it is oval in shape. The measurements, you can see the measurements in the screen. So these are important in some cases. Most of the chromosomal cases, the size of the testis will be very small compared to the normal testis. So we should be aware of the shape and also the size of the testis, and also the feel of the testis also. In many cases, in CA, cases like CA, etc., it will be very hard. And in some cases, some chromosomal cases also, it will be very hard. So it's very easy to examine the
scrotum, the testis. So you can easily feel any changes in anatomical changes. We can easily feel the changes by just palpitation. So I'm not going into any detailed anatomy here. Just I'll show you the images from here. I can see the cursor here. So this upper pole is related with the spermatic cord, which contains the ductus deferens, and this contains some of the important arteries, the testicular artery coming into the testis, and also this network of vein. This is very important. It's the tympaniform plexus. This network of veins, it's when it's enlarged, it may cause infertility. So it's one of the main causes of acquired infertility. So you can see the head of the epididymis here. You can see the shape, almost oval in shape. And I'll just go through the just basic some anatomy. So it has three coverings: the tunica vaginalis, tunica albuginea, and tunica vasculosa. So this the tunica vasculosa is the innermost layer, which basically consists the vessels and nerves. The tunica albuginea is a dense, thick structure which divides the testis into different compartments, different lobules. And in these tubules, you can see the seminiferous tubule. So you can see the tunica albuginea here, dividing it into different lobules. And the outermost covering is tunica vaginalis. So tunica vaginalis are just, you can see the two parietal and visceral layer, and you can see a cavity here. So the hydrocele conditions happen when fluid gets accumulated in this cavity. It does not cause any infertility, but when the swelling is very large enough, it may interfere with the blood supply of the testis, and that may lead to infertility. So just this image is showing the descent of the testis. So testis, in the 7th week, you can see it is in the abdominal cavity, and by 13th it comes lower, and in the 24th week you can see it's almost in the inguinal canal, and in the newborn it will be in the scrotum. So this descent of testis is very important because cryptorchidism is a condition which is very commonly related to infertility. So as if the testis does not descend properly, it may lead to infertility. Okay, we'll discuss that part later. So this descent of testis is very important. And the next we have the tunica albuginea. You can see the structure here. You can see the how it is dividing it into different lobules. So it will divide the testis into 200 to 300 lobules, and the thick and posterior part, it is known as the mediastinum testis. So this is a cross section showing the entire outer covering. You can see the covering of the scrotum, also the skin, the external spermatic fascia, the cremasteric fascia, internal spermatic fascia, which are part of the scrotum. And the testis will start with the tunica vaginalis, the two layers, parietal and visceral layer, and the sac within it. And then you can see the tunica albuginea and also the tunica vasculosa. So this is the basic structure of testis. So going into the the arrangement, as we have mentioned, the tunica albuginea is dividing it into lobules, and each lobule consists of the seminiferous tubule. So this is the most important part of the testis, the seminiferous tubules, which is responsible for the production of the spermatozoa. So you can see the arrangement, the scheme here, how they are arranged. So we have mentioned there are many 200 to 300 lobules are present in each lobule. You can have 2 to 3 seminiferous tubules. So these seminiferous tubules, they join together to form straight tubules, 20 to 30 straight tubules, and then you can see the straight tubules here, and they then form a network here. And this network is known as the rete testis. And from the network arises efferent ductules, which goes into the epididymis, to the head of the epididymis, and then they will join together, and they form a highly coiled single tube within the epididymis, and then it will continue as the ductus deferens. So this arrangement is very important. So it gives a lot of time for the sperm to remain in the epididymis, and it helps in the maturation of the epididymis. The sperm. So considering the cells, so we have
two types of cells within the seminiferous tubules. These are the spermatogenic cells at the different levels of development. And there is a cell known as supporting cells or cells of Sartori. So this is important for the maturation of spermatozoa. And outside the seminiferous tubules, we have another type of cell, which they are known as the Leydig cells, and they secrete the testosterone or the androgen. So these are the basic cells. So the arrangements of these cells are also important. In different conditions, the cells affected will be different. So this is the basic anatomy of testis. So we have divided the causes of infertility into three: pre-testicular, testicular, and post-testicular. So now we will just discuss which are the conditions affecting the testicular or the testicular causes. So here you can see the seminiferous tubules here, and you can see the corpus, the tunica albuginea. Within this, you can see the tunica vasculosa here, and you can see the seminiferous tubules. And outside the seminiferous tubules, you can see the Leydig cells. And within the seminiferous tubules, we have the two types: the Sartori cells and the spermatozoa. You can here see the Leydig cells outside the seminiferous tubules. So this arrangement, this is showing the different layers. Okay. So this is showing the different stages of the sperm cells. So we have the starts with germ cell, then spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatis, and mature sperm. So all these will be present within the seminiferous tubules, along with the Sartori cells. Okay. So the primary causes for testicular causes, we can divide it into, there are two types. There is chromosomal and non-chromosomal. So these are the some of the abnormalities which can be considered under the chromosomal abnormalities. You may be heard about these conditions: the Klinefelter syndrome, the XX male, XYY male, Noonan syndrome. So we'll just go through them fastly. So what are the changes that they are producing in the testis? We'll focus only on that part. So in the Klinefelter syndrome, so it's a very common condition actually. So it affects 1 in 500 male patients, and it's one of the most common causes of chromosomal abnormality, which is causing infertility. So the main thing is, what is happening in the testis? It is causing the hyalinization and fibrosis of the seminiferous tubules. We have seen the seminiferous tubules, and we know how important it is for the development of the spermatozoa. So it causes the fibrosis of the seminiferous tubules. So this leads to shrunken testis. So while examining, the testis will be very small. So you can see the measurements given here. So it will be usually less than 2 centimeter in length, 1 centimeter in width. So it will be less than half that the size of the normal testis, and also it will be very hard because of the fibrosis. So while examining, if you can see these two changes in the testis. So this is the main changes taking place in the testis in Klinefelter syndrome. So no sperm will be producing. So there will be semen will not contain any sperm. Okay. So the condition will be causing is azoospermia. Then there is another condition, XX male. So in this, you can see in the image. So a small part of the Y chromosomes comes into the X chromosomes. So this will give, cause the formation of the testis. There will be testis, but the size will be very decreased. But the person will be infertile. The other male characteristic will not be present. Then we have the XYY male, an extra Y chromosome will come. So the person will be a very tall, very energetic or hyperactive. So in this case also, they will be having oligospermia or azoospermia. So in the condition,
chromosomal condition, Noonan syndrome. So in this case, the testis will not descend. So that condition is known as the cryptorchidism. Testis, we have seen in the image how the testis descends from the abdominal cavity into the scrotum. So that process will not take place properly, and that is related with infertility. So even if we correct that surgically, azoospermia and oligospermia will be present. So and the condition Y chromosome microdeletion syndrome. So in the Y chromosome, there are some areas which are important for the development of sperm and the male gonads. If deletion happened to that area, then the area, especially the area YQ11, so it will cause azoospermia or oligospermia, etc., depending upon the area where the deletion is taking place. And there is another condition known as vanishing testis syndrome. So in this, it's actually the causes are unknown, but the chromosomal, it will be normal. The patient have the normal karyotype, 46XY, but they will not have any testis. So when examining, testis will be absent. That condition is known as the vanishing testis syndrome or anorchia. Anorchia can be bilateral or unilateral. So these are the some of the conditions that causes that are due to the chromosomal effect. Then we are going into the non-chromosomal effect, which are acquired by the testis. So this include varicocele. So we have mentioned the Pambiniform plexus earlier. So varicocele comes there. Then cryptorchidism, undescended testis, trauma, chemotherapy, radiation therapy, orchitis. Orchitis is also one of the important reasons. And the condition known as germinal cell aplasia. So we have seen the seminiferous tubule, we have seen two types of cell. So in this case, the germinal cells will be absent. So this is one of the very common cause of acquired male infertility, varicocele. So varicocele, what is varicocele? Varicocele is the enlargement or the dilation of the Pambiniform plexus, which is the venous drainage of the testis. So what happens here, because the drainage is not proper, there will be increased temperature. The sperm count will decrease, and okay, so that it is due to the increased testicular temperature and reflux of toxic metabolites and germ cell hypoxia. Hypoxia will happen with due to improper blood supply. So temperature will increase, the sperm count will decrease. All the functions of all the cells present there will be decreased. So that's almost it's one of the very common causes for infertility, acquired infertility. Then cryptorchidism is nothing but undescended testis. So you can see in the image there are three areas shown here: the abdominal inguinal canal, the high scrotal. So the duration or the how far it is from the normal position, it determines the infertility. If it is very far, it will be more infertile. The person, and if it is more closer, the infertility, it can be cured actually. So farther from its normal landing location of the scrotum, the longer the time that testicle resides out of the scrotum, and the development delay will be there, and the likelihood of infertility will be more. So if the testis is more upper in position, the person is more likely to be infertile. Then this is the condition that we have mentioned earlier. So we have mentioned in the seminiferous tubules, there are two types of cells, the Sertoli cells and also the germinal germ cells, the spermatozoa. So in this image, you can see in the A and B, it's normal. And in the F image, what you can see, you can only see the Sertoli cells. The other cells are absent. So in this, you can see all of the cells present here, the spermatozoa on different levels. So in this case, there are only Sertoli cells are present here. So this condition is known as the Sertoli cell syndrome or the germinal cell aplasia. Then next, another important cause of in adults of acquired infertility, that is orchitis. So mumps is very common cause for that. So of the adults who are getting infected by mumps, 25%
of them develop the orchitis. Okay, so there are many causes for the orchitis. So either how they are damaging the testis, they are causing direct damage, or they are causing swelling, which leads to the improper blood supply to the testis, leading to the damage. So trauma can lead to damage to the testis, and it may lead to infertility. Chemotherapy and radiation therapy, as we know, chemotherapy, they will target the cells which are dividing very fastly. So this will affect the germ cells, and also the radiation also. So the Sertoli cells and germ cells they are highly radiosensitive. So they are also affected. So even after chemotherapy and radiation therapy, the doctors will give you a time period to avoid getting a child. So even after the radiation therapy, there may be damages in the sperm cells, which may cause any mutations. So they will avoid. They will give a period for a particular years, for several years. So we have completed the testicular part. So these are the chromosomal and non-chromosomal reasons, the diseases that are related with testis. So next we are going into the pathway for the non-chromosomal or the post-testicular causes of infertility. So this is problem with the transportation. So here we can see the Srodoroda, and even we can see the Vimarga Ganam also. So this can be actually prevented. It can be cured. This type of most of this type of infertilities. So before moving into that, we'll just firstly go through the anatomy. So sir has already mentioned. Just we have seen the epididymis. So it consists of the head. It has a head, body, and the tail, and it will continue as the vas deferens. The vas deferens, it passes first in the scrotum, then through the inguinal canal, then it will enter the lesser pelvis, greater pelvis, and then into the lesser pelvis. So it ends by joining with the seminal vesicle. So you can see the ductus deferens coming, and you can see the seminal vesicle here, and they together join together to form the ejaculatory duct behind the urinary bladder. So the seminal vesicle, it also has some secretions. So sir has mentioned that the fructose, it gives the energy for the spermatozoa. And then comes the ejaculatory duct. So ejaculatory duct, it is actually the union of both the ductus deferens and the duct of seminal vesicle. They unite together to form the ejaculatory duct. So ejaculatory duct, it's mostly present within the prostate. So it delivers the sperm into the urethra, into the male urethra. So it's 2 centimeter in length. So in this image, you can clearly see the ductus deferens coming through the posterior part of the urinary bladder. You can see the seminal vesicle. You can see the seminal duct. They are joining to form the ejaculatory duct, and the ejaculatory duct is draining into the male urethra. So prostate is also an important organ in the male reproductive system. So it also adds bulk to the seminal fluid, along with that of the seminal vesicle and also the bulbourethral gland. So any surgery related with prostate is very important, because in this area there is ejaculation problems may happen, because it is joining with the male urethra. So there are systems here which prevent the backflow of or the entry of the semen into the urinary bladder. So if something is some diseases of any disease of prostate or any surgery related to prostate may damage that system, and that this may cause backflow of the semen into the bladder. You can see in the image how they are joining into the male urethra. So this also secrete an alkaline fluid, and it also helps to neutralize the acidic vaginal environment, also helps in the lubrication or nutrition for the sperm.
And another important gland is the bulbourethral gland. So it also helps in the secretions of the semen. It also contains glycoproteins, help for the lubricants of the semen. So you can see how it is its tube, its opening is in the bulbar part of the urethra. So penis, sir has already explained it detail. We have the root and the body. Root has 2 crusts and 1 bulb, and the body has 2 corpus cavernosa and corpus spongiosum. Male urethra consisting of the posterior part consisting of preprostatic, prostatic, membranous. Dr. Janit, you explained in details, although sir has explained, but students have joined in and they will learn through these diagrams properly. So you Okay. can explain, no issue. Okay. Okay, so the penis basically consists of the root and the body. So the root you can see here. So the root is the attached part. It is attached to the perineum. It is attached to the pelvic, the pubis here. So you can see the 2 crusts here, the crust of penis, and the middle you can see the body, sorry, the bulb, and the crust is covered by the ischiocavernosus muscle, and this is covered by the bulbospongiosus muscle. So the crust will continue in the body as the corpus cavernosa, and in the corpus, the bulb will continue as the corpus spongiosum. So I have not included any detailed anatomy of penis because the conditions we'll be talking will be the duct of the mainly related with the ejaculatory duct and also the ductus deferens. So this is a basic anatomy, and here also you can see the male penis here. So you can see the male urethra passing through the penis, and it can be divided into 2 parts. There is a posterior part and an anterior part. So posterior part, it consists of the that is mainly related with the prostatic part, prostate. So there is a prostatic part, and there is a small pre-prostatic part, and there is a membranous part here. And then comes the anterior part, which is basically it is passing through within the penis. So there is a bulbar part which passes through the bulb of the penis, and the penile urethra, which is passing through the corpus spongiosum. So through the bulb we have the bulbar part, bulbar urethra, and for the body we have the pendulous or the penile urethra. So while we'll now discuss about the post-testicular causes. So we have discussed about the testicular causes, the chromosomal and non-chromosomal. So it's all affecting the testis. So there are infections. There are many other causes. So now we are moving into the post-testicular causes. So there can be congenital and acquired also. So congenital conditions is related with the ductal system. So here you can see the epididymis, you can see the vas deferens. So it's basically the damage or the abnormality will be at the tail of the epididymis and also the proximal part of the ductus deferens. So there can be absence of ductus deferens, vas deferens, and it can be accompanied by absence of seminal vesicle or other part of the epididymis. So it can happen any part of this tract. There can be damage in the epididymis, there can be damage in the ductus deferens, there can be abnormality. Okay, so as these are separately derived, the testis is separately derived from the gonadal ridge, and the vas deferens epididymis, they are deriving from the Wolffian duct. So any damage to these Wolffian duct can cause abnormality in these 2 ducts, but the semen or the scrot or testis will be very normal, quite normal. So it will be producing semen normally, but the sperm will not reach into the urethra because of the damage in the transportation system. So here the image is showing some of the defects in the vas deferens or ductus deferens. So these are all congenital, or there can be complete or partial ejaculatory duct obstructions
in male infertility, we can usually see that you can see some of the images here, some of the abnormalities. So we can azoospermia means the semen is coming out, but the sperm will not be there. So it can be because of two reasons. Either it can be non-obstructive, so the cause will be testicular, testis is not producing the sperm, or it can be obstructive azoospermia. So here the obstruction can be at the level of ductus deferens, epididymis, or it can be ejaculatory duct obstruction or vasoepididymal junction obstructions. These are some areas where obstruction can happen. And I have mentioned while discussing the prostate, so there can be delivery abnormality. There is a retrograde ejaculation can happen. Retrograde ejaculation, the sperm will be directed into the urinary bladder, or anejaculation means there will be no ejaculation. So these are the some of the causes. So it can happen in any part of this duct, this pathway. So some of the we can see some of the reasons why this obstruction is happening. So cyst, it can be due to cyst. Epidermal cysts are very common, or calcification, stones, any infections can cause obstruction. There's a condition known as Young syndrome, which is having meningitis, and also it is related with it is concerned with infertility. It also will cause obstruction. Any trauma, any surgery, inguinal surgery, scrotal surgeries, all these can cause obstruction in this pathway. So this is the important reasons why the acquired blockage can happen. So we have mentioned the congenital, and these are the acquired part. So we have gone through all the aspects of the causes of infertility. So as I mentioned, there are mainly three causes: pre-testicular, testicular, and post-testicular. Pre-testicular is related with the hypothalamus and pituitary axis, and the that related with the testis, that can be chromosomal, congenital, or that can be acquired by infection or any other causes. Similarly, the duct must be patterned for the sperm to reach outside to the outside environment. So all these duct has to be patterned. So this obstruction can happen at any level, at the epididymis, at the vas deferens, at the ejaculatory duct obstruction is common. And even in the prostate also, then can be retrograde ejaculation. And in penis also, any surgeries or any related any nervous conditions, any nerve damage to that area will also cause problems with the ejaculation. So I'll just show you the images here. So just differentiating between the secretory azoospermia, where testis is not producing any sperm. This is obstructive azoospermia, where the tract is obstructed. And there can be the other ejaculatory issues. So in this image, you can see the pathway, how the testis, how the sperm is getting back into the urinary bladder. So it's a kind of Vimarga Gamanam, and Srotorodam and Vimarga Gamanam are the main problem happening in the duct. So there are also many other causes. There is diabetic neuropathy. So diabetic and infertility is very related. So it does not come in the purview of anatomy, so I have not mentioned any further of that. Then bladder neck surgery, retroperitoneal lymph node dissection. Lymph node dissection is basically in case of testicular carcinoma, we do take the lymph nodes to prevent the spread. So in that case also this can happen, retrograde ejaculation. And rectal surgery, any surgery related to the spinal cord may damage the nervous system into the penis, and that will lead to the ejaculation. So these are all the causes that can cause infertility, which are related to anatomy. So I'll conclude this session. So thank you for your patient listening. So these are the what I could say the applied aspects of anatomy, or the
anatomy related with the infertility. There are many other diseases related to the reproductive system. So I just included the diseases, and I just focus the areas that can be causes the infertility. Okay. Thank you. Yeah, nicely presented, Dr. Jainit. For the information of participants, I would like to say that Dr. Jainit is assistant professor in Government Ayurvedic College, Kannur, Kerala, and he has presented slides very nicely and compiled the topic very nicely. And I would like to invite Dr. Ramvi sir for expert comments on anatomical aspects. रामी सर, आपने कुछ बोलना है क्या? बोलना चाहेंगे सर? यस मैम। जी सर, आइए। पहले तो दोनों जो अपने वक्ता थे उनको बहुत बहुत बधाई, स्पेशली जैनित सर को। उन्होंने डिटेल में अपनी बातें एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात की, और मेरे ख्याल से और कोई बात रही नहीं जो अपने मॉडर्न साइंस कहती है जिसमें उन्होंने जो नहीं की हो। और मेल इनफर्टिलिटी की जो पॉजिटिव फैक्टर्स वगैरह हैं, वो जब मेल इनफर्टिलिटी आएगी उसमें सारी चीजें मॉडर्न में जो कही गई हैं वो आ जाएंगी। कुछ चीजें अपने आयुर्वेद में भी कही गई हैं, उनको अपने उसको कोरिलेट किया जा सकता है। अपने जो वृषण है, वृषण के बारे में बताया गया है। जैसे उन्होंने बताया सुप्रा टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर, इंफ्रा टेस्टिकुलर, तो तीनों तरह के पॉजिटिव फैक्टर इनको अलग से देखा जाए तो अपने आयुर्वेद के अंदर भी कहा गया है। जैसे टेस्टिकल के बारे में, तो उसकी जो मात्रा जो माप बताया गया है वो बताया गया 2 अंगुलम। सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान 15 या 13 में कहा है। तो इसकी अगर साइज छोटी हो जाती है या फिर साइज बढ़ जाती है, तो जैसे अपने टेस्टिकुलर एट्रोफी है, टेस्टिकुलर माइक्रो ऑर्किडिज्म है, ये जो चीजें हैं उसके साइज के ऊपर भी डायग्नोसिस किया जाता है, जो उन्होंने साइज में बता दिया। इसी तरह से अपने वेरिकोज वेन, हाइड्रोसेल, ऑर्काइटिस, ये सारी चीजें साइज में बढ़ जाती हैं। तो साइज जो सुश्रुत ने कहा है उस साइज को आधार पर भी अपने डायग्नोसिस किया जा सकता है, किस तरह से अपने इसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है टेस्टिकुलर। पेनिस की बात आती है तो पेनिस में उन्होंने शायद चतुरंगम मेहन के बारे में कहा है। तो चतुरंग मेहन का जो जगह बताई है उसके लिए उसके साइज में भी अलग अलग साइज बता दिए हैं। तो इस साइज के आधार पर जो 2 तरह की चीजें बताई, एक तो प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टिस, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, और अपने सप्लाई ऑफ द स्पर्म टू द वेजाइनल रूट। तो दोनों की चीज में पेनिस के बारे में जो बताई, वहां से पूरा वहां से एपिडिडाइमस से लेकर के जो सप्लाई चेन है या ट्रैक्ट है उसके बारे में डिटेल में बात की है। इसको भी आयुर्वेद के अंदर जो डिजीज बताई है, संड प्रकार के बताए, चरकनित 8 प्रकार के संड, उनसे टेस्टिकल से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं वो सारी संड के अंदर अपने उसको कोरिलेट किया जा सकता है, उसके अनुसार देखा जा सकता है। और अपने जो एक चीज और मैं बताऊं, काम सूत्र के अंदर 3 तरह के शिश्नी का वर्णन उन्होंने किया है। एक है सशक, दूसरा है अश्व, और तीसरा है सशक, अश्व और वृषभ। तो सशक की 4 अंगुल, सशक की 6 अंगुल, और वृषभ की 8 अंगुल, और अपने अश्व की 12 अंगुल की लंबाई उन्होंने बताई। इसी तरह से आचार्य सुश्रुत जो दीर्घायु कहते हैं, दीर्घायु की जहाँ पे वर्णन करते हैं, वहां पर उन्होंने चतुरंगुल शिश्न जिसको बताया उसको उन्होंने दीर्घायु बताई। तो इस तरह से कोरिलेट करने के लिए उन्होंने बात की है। योनि के बारे में भी बात की है उन्होंने। योनि 3 प्रकार की बताई है उसमें, आजा योनि, माइसी योनि और अपने गज योनि। तो इनका भी उनके अंदर संबंध करने के लिए जो स्त्री किस तरह से पसंद करेंगे उसका भी उन्होंने बताया। तो ये जो डिटेल में उन्होंने डॉक्टर साहब ने बात की, बहुत ही अच्छा किया। और उसमें जहाँ जहाँ हम लोगों को अपने देखना पड़ेगा कि हम जो ट्रीटमेंट करने जाएंगे आगे चल के, जब पुरुष बंधुत्व की चिकित्सा करेंगे, तो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी सुप्रा टेस्टिकुलर में क्या कर सकते हैं, टेस्टिकुलर में क्या कर सकते हैं, और इंफ्रा टेस्टिकुलर में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
क्या ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जैसे एजेनेसिस ऑफ द टेस्टिकल है, एक चीज उन्होंने बताई, गोनेट अपने जिस्टिक गोनेट्स होते हैं, मम्स के बाद में जिस्टिक गोनेट्स हो जाते हैं। जिस्टिक गोनेट्स के अंदर क्या है, जो अपने सार्टोली सेल्स हैं या अपने ऊपर अपने लीडिंग सेल्स हैं, दोनों के दोनों ही अपने उसके अंदर एट्रोफी हो जाती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें भी आचार्य सुश्रुत को जब चिकित्सा बताता है तो सॉफ्ट यानी मृदु के रूप में टेस्टिकल को रखा है उन्होंने। फर्म होने चाहिए टेस्टिकल को अपने स्पर्श करते समय। अगर स्टिक हो जाएगा तो एकदम हार्ड हो जाएगा, और अगर उसके अंदर अपने स्वेलिंग हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएगा तो सॉफ्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आचार्यों ने भी बहुत अच्छी बातें कही हैं। उनके ऊपर आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करेंगे, उसको समय बात करेंगे। मगर डॉक्टर साहब ने जैनथनी जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, इसमें कोई चीज नहीं रह गई। इसमें मेरे ख्याल से एनाटॉमिकल एस्पेक्ट जितने भी आते हैं, और एनाटॉमिकल ही नहीं, फंक्शनल जो भी एस्पेक्ट आते हैं वो सारे आ गए। कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, किसमें एंजियोस्पर्मिया होगा, किसमें ओलिगोस्पर्मिया होगा उसमें, और किसके अंदर अपने ओलिगोस्पर्मिया है तो किसको ट्रीट किया जा सकता है, कौन सा सर्जिकल है, कौन सा अपने मेडिसिन के द्वारा किया जा सकता है। तो डिटेल में बहुत अच्छा बात की है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपने बोलने के लिए। जी थैंक यू सर। एक्चुअली हमारा दोनों रचना शारीर के स्पीकर्स लेने का पर्पज ही ये था कि रचना शारीर से रहेंगे तो रचना को प्रॉपरली बता पाएंगे। इसीलिए ही हमने ये सोचा था कि रचना शारीर से ये हैं लोग। तो इन्होंने रियली दोनों स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से बताया है। तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं एनाटॉमी से रिलेटेड, अगर कोई पूछना चाहता है तो। Questions, suggestions, experiences, everything is welcome. यदि कोई कुछ बोलना चाहे, हमारे पास 15 से 20 मिनट ओपन सेशन है जिसमें हम लोग खुलकर चर्चा कर सकते हैं। मैडम चैट में शायद 2 क्वेश्चंस हैं। श्योर। एक क्वेश्चन, इफ ए पेशेंट with undescended testis in childhood corrected by surgery, it may problem intercourse and reproductive life. Okay, तो क्वेश्चन, तो जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है, अगर वो कितने टाइम, मतलब कब तक वो वहां पे रहता है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब द लॉन्गर इट रिमेन्स अवे फ्रॉम द स्क्रोटम, द चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी आर मोर। अगर प्रॉपरली डिसेंड, मतलब if it is close to the scrotum and if it is corrected, I don't think the infertility, that kind of infertility that can be cured. और एक और क्वेश्चन आया है, इस epidermal hypertension can cause serious problem in future. So epidermal hypertension, actually it's not a very serious condition, so that tension can be released by ejaculation or any other process. And but if you can closely monitor the testis and epididymis. So the benefit of by examining testis and epididymis is that we can do the self-examination properly. We can, if you have an idea about the anatomy of testis and epididymis, you can easily palpate all the structure. And any cyst, epididymal cyst are very common. That is also not problematic. But any growth on the testis, it's very important. Any hard mass, if you feel any hard mass in the testis, then that's very that can be a CA testis, and the testis CA is very common in young adults. So it's important to examine this. Scrotal examination is very important, or even for self-examination. Thank you, Dr. Janet. If anyone want to ask, session is open for questions. Our both speaker have explained nicely, so I hope there is no question. Yes. No study, no confusion. अपने बचपन में एक more study, more confusion. No study, no confusion.
एक अभी प्रश्न आया था, उसका जवाब ये है, क्रिप्टो ऑर्किडियम जो है अगर उसको अपने रिपेयरेबल है, अब वो जितनी जल्दी रिपेयर हो जाए, अगर उसके अंदर अपने चाइल्डहुड के अंदर ही जल्दी रिपेयर हो जाता है तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की जो रेट है वो ज्यादा रिजल्ट उसकी मिलते हैं। अगर वो आफ्टर अपने एडल्टहुड के बाद में अगर उसके अंदर ऑर्किडिज्म बाद में डायग्नोसिस, जितना डिले डायग्नोसिस होगा, जितना बाद में करेक्शन किया जाएगा, उतना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस की संख्या उसमें कम होती चली जाएगी। तो इसलिए क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद में पता होता है, उसके बाद में उसको कर दिया, क्योंकि इनका जो टेस्टिकल ओवरी जो भी अपने होता है वो हाइंड गट से बनता है। हाइंड गट के बाद में उसके बाद में जो होता है यूरोजेनिटल रिज, उसके द्वारा बनता है। तो ये एक्चुअली बनती हुई दोनों को दोनों जो अपने एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। ओवरी का भी वही होता है और टेस्टिकल का भी होता है। टेस्टिकल का ये है कि नीचे आ जाता है, ओवरी वहां पर अपने एब्डोमिनल कैविटी में रहती है। नेफ्रोन और अपने ओवरी दोनों को दोनों स्टीरॉयड पैदा करते हैं, दोनों भाई बहनी कह लीजिए या पड़ोसी कह लीजिए, एक ही जगह से एक तरह से ही पैदा होते हैं अपने एम्ब्रियोलॉजी में। तो इसलिए टेस्टिकल का जितनी जल्दी अपने ऑपरेट करके सही समय पे सही स्थान पे ले जाएंगे तो उसमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और बाद में शादी के बाद में पता चल रहा है, इनफर्टिलिटी के बाद में पता चल रहा है, उसको ले भी आते हैं, करेक्शन कराते हैं, तो उसके बाद में इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि मतलब पहले अगर करेक्शन हो जाता है। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में जितना जल्दी ऑपरेशन किया जाए उतना अच्छा है, और शादी के बाद करेंगे तो भी रिजल्ट मिलते हैं, मगर इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। दो और क्वेश्चंस आए हैं सर। Patient report is azoospermic, but testicular biopsy report shows spermatogenesis. Please give your opinion about treatment. So, तो spermatogenesis ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन obstruction की वजह से ही है। So, वो obstruction के रीजन एनीप्लेस एपिडिडाइमस के लेकर के बास डिफरेंस है। बास डिफरेंस के बाद में पूरा का पूरा सप्लाई चेन है, जितनी भी ट्रैक्ट है सप्लाई की, उसमें कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में डॉक्टर साहब ने बताया पूरी, उसके बाद में ट्रैक्ट के अंदर टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं। उसमें अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही है, दैट इज द टेस्टिकुलर कॉजेज। और टेस्टिकुलर बायोप्सी के अंदर टेस्ट अपने स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मेटोजोनिया भी है, तो उसका मतलब है आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन की कई जगह है, पूरी पूरी ट्रैक्ट में कहीं भी वो जितनी भी जगह है वो करेक्टेबल है। करेक्टेबल है यानी ऑपरेटिव भी के द्वारा भी करेक्टेबल है, और कुछ ऐसी होती है मेडिसिन के द्वारा भी करते हैं। सर नमस्कार। यस सर नमस्कार। सर मैं यही शर्मा सर से पूछना चाह रही थी सर, कुछ मेडिसिन के जो आपने बताया तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि क्या क्या मेडिसिन है या कहाँ कहाँ उसमें हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है। जी मैम, आज एक्चुअली एनाटॉमी के ऊपर चर्चा हो रही है, डिटेल में बात अपने करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी की बात करें भाई, कई सेशन आएंगे, उसमें अपने जी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। आज एनाटॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स करेक्टेबल हैं और नॉन करेक्टेबल हैं, सर्जिकल करेक्टेबल हैं, उनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो ठीक अपने सर, डिटेल थैंक में यू बात सर। अभी इनफर्टिलिटी पे बात हुई है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल अपने पुरुष बंधत्व, स्त्री बंधत्व आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न के अनुसार सारे पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उसमें मेडिसिन के बारे में डिटेल में चर्चा कर, ये हर एक मेडिसिन एक काम पे नहीं करेगी। नहीं इस सर, पर मैं मैं यही हाँ जी सर, ना क्योंकि वो जैसे आपने बताया ही सर कि संघ है, वो संघ हुआ वहाँ, तो संघ हाँ में जनरली वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही लोगों ने एडवाइस किया है वहाँ। लेकिन जी जी वही है कि उसको हम, जैसे आपने बताया ना कि आपका एक्सपीरियंस है कि हम मेडिसिन से भी इसको ठीक कर सकते हैं, तो हाँ वही हाँ मैं हाँ, थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा जानना चाह रही थी सर कि आपके विचार क्या हैं। जी सर बिल्कुल। पुरुष थैंक यू पुरुष सर, अच्छा पुरुष लगा सर बंधुत्व जी। पुरुष बंधुत्व के अंदर पुरुष में उत्तरवस्ती का प्रयोग किया गया है, जो कहाँ तक काम जी करता है उसका बारे में डिटेल बात करेंगे अपने, है ना। जी जी सर जी, उसमें सर वर्क मिला है, लेकिन अच्छा लगा सर, थैंक यू जी सर। हम्म। मैडम विद्यानारायण का जो क्वेश्चन है वो देखिए। जननजीत जी। वो एक्चुअली ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहा है सर। ओ ओ
सर मुझे क्या लगता है कि ट्रीटमेंट जानने के पहले ना कि अपने को आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से भी थोड़ा देखना चाहिए इन सब के लिए, क्योंकि अपन वी हैव टू ओनली फोकस ऑन द मॉडर्न एस्पेक्ट्स जनरली, क्योंकि अपनी ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करनी चाहिए। तो अपने कंसेप्ट आयुर्वेद की जो भी है वो पहले इस बारे में आपके आने चाहिए, हाँ, वेदर इट इज दिस एनाटॉमिकल या एक्चुअली, फिजियोलॉजी। या एक्चुअली ये फर्स्ट इनिशियल एनाटॉमी का लेक्चर रखा हमने, फिर फिजियोलॉजी रखेंगे, फिर शुक्रवार स्रोतस, फिर शुक्र दृष्टि, ऐसे करके धीरे धीरे आगे या मैम बढ़ना है। एक्चुअली मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये हाँ एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स है वो सारा मॉडर्न का है, एंड हाँ जो हाँ हाँ आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है जो एनाटॉमी के रिलेटेड है वो भी बहुत कुछ है इसमें। हाँ, वो लेंगे ना अभी आगे, सब हाँ सब ही आएंगे धीरे धीरे। हाँ। पर एक्चुअली जनरली हम लोगों को सबको आदत होती है कि सीधा हम ट्रीटमेंट पूछना चालू कर देते हैं ना, वही वही होता है होता मैम, क्योंकि जब है ना। ट्रीटमेंट पूछते हैं तो पहले अपना आयुर्वेदिक भी आने चाहिए ना, कि हाँ हाँ, डायरेक्ट वो आए। टेस्टोस्टेरॉन या जो ऑब्स्ट्रक्शन वो करने से अच्छा आपने इसमें भी बहुत कुछ लिखा है हाँ हाँ शरीर में। हाँ, वो तो उन्होंने सारे सेशंस। उन्होंने मैम ने पूछा है प्रश्न, वो एक्चुअली फाइमोसिस के लिए पूछा है। यस सर। हम्म 7 साल का बच्चा है तो फाइमोसिस है, तो फाइमोसिस 7 महीने के बच्चे के अंदर फाइमोसिस के अंदर मैंने देखा है कि अगर पेशेंट को सही तरह से स्नेह शोधन करके, बच्चा है इसलिए, तो उसको अगर डायलेट करेंगे तो भी फाइमोसिस ठीक हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज उसके अंदर सर्कमसीजन होता है, उसको करने के बाद नॉर्मल हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। और सर कुछ डिसीज ऐसे भी होते हैं जो सर सर्जरी से ट्रीटेड होते एक्चुअली फाइमोसिस, हाँ सरकमसेशन किया है सर बच्चा का, हाँ लेकिन हाँ। टेस्टिस अभी तो 8 साल का है, लास्ट ईयर किया था, अभी 8 साल का है, लेकिन पेनिस का ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा वो गेट टेस्टोस्टेरॉन डन। वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स तो बहुत कम है, तो हमको प्यूबर्टी तक वेट करना है कि क्या सजेशन क्या देना है सर पेरेंट्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, प्यूबर्टी तक अभी इंतजार करना है। बच्चों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की जो वो रेंज है वो अलग है, और अपने हम्म। एडल्ट टेस्टोस्टेरोन की रेंज अलग है। अपने अच्छा। आयुर्वेद का है, पूर्ण धातु नहीं हुई है अभी, पूर्ण धातु हो जाएगी तो उसका टेस्टोस्टेरोन का जो रेंज है बच्चों से जो एडल्ट के बराबर हो जाएगा। अभी अपने अपने कंपेयर कर रहे होंगे बच्चों की जगह पे, तो टेस्टोस्टेरोन अच्छा। का कोई रोल नहीं है इसमें फाइमोसिस के अंदर। टेस्टोस्टेरोन का रोल है सिर्फ टेस्टिस के द्वारा प्रोडक्शन करता है जो, तो वो टेस्टिस का रोल है, फाइमोसिस से कोई लेना देना नहीं। Okay, so I'll tell them wait till puberty, then we'll see the Yes, size of the penis. yes, yes. There are no treatment of the testosterone. Testosterone उसको बच्चों को भी नहीं देना, अच्छा हॉर्मोनल अच्छा ठीक ट्रीटमेंट नहीं देना। है। Yes, yes, sir. Thank you, sir. Now over to Pawan sir. Now session is, I think, uh, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हम्म, मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से प्रार्थना करता हूँ, नेक्स्ट 10 मिनट और हैं जो हमारे पुराने आधार स्तंभ हैं, जब तक अगली वेबिनार और यूनिक है, प्लीज डू ज्वाइन नेक्स्ट वेबिनार बिकॉज दैट इज ऑन केरला, यूनिक केरला आयुर्वेदिक टीचिंग मेथोडोलॉजी, हाउ आयुर्वेद हैज फ्लरिश्ड इन Kerala and what was their education system. So all experts from Kerala will guide us regarding that teaching methodology. आदरणीय अग्निहोत्री, योर थैंक यू कमेंट। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही लर्नेड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्पीकर्स ने आज अपनी बात रखी, और ये बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर थी, और प्योरली वहाँ पर डिस्कस किया गया एनाटॉमिकल एस्पेक्ट एज वेल एज द अप्लाइड एनाटॉमिकल एस्पेक्ट। अभी इसको मैं आयुर्वेद की बात इन्होंने बतलाई रास्ते में, तो हम वहाँ पर मूत्र उत्सर्जन एवं जनन संस्थान ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जहाँ तक शरीर और शारीरिक संरचना का सवाल है तो वही ये शब्दों का भेद है, लेकिन शरीर क्रियात्मक भाव जो है वो अगले टॉपिक पर लिया जाएगा। अब क्योंकि इसमें अधिकांश लोग या तो एकेडमिशियंस हैं, एकेडमिशियंस को होते होते क्लिनिशियंस भी हैं, इसलिए क्वेश्चन जो क्लिनिक से जुड़े ज्यादा आ गए कि किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर है या डिजीज है तो ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो पाएगा। तो ये सही बात है कि वो एक पक्ष है, लेकिन हम पहले जाने तो सही, जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस की ही बात थी, तो जब तक उसको एनाटॉमिकल पूरा असेसमेंट हुआ तब जान पाए, उसके बेस करके ही आगे की रणनीति, आगे का लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है। इसलिए आदरणीय रामवीर सर ने बहुत ही इंटेलिजेंटली इस बात को थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि उसको हम अगले वक्तव्यों में चर्चा करेंगे, तब कन्फाइंड टू दैट सब्जेक्ट हो जाएगा।
अभी इवन आयुर्वेद का पक्ष और हो जाता है, तो उसमें शर्मा साहब ने अपनी बातें रखी हैं, जहाँ तक साइज का सवाल होता है या रिलेटिवली सारी बातें बतलाई, वो भी ठीक है। तो क्वेश्चन तो इसलिए नहीं बने कि जहाँ लोग बहुत ज्यादा एनाटॉमी पढ़ते ही नहीं, आगे एकदम जाके कोशिश करते हैं कि हमें क्लिनिकल मिले। अब सवाल ये, क्लिनिकल पेशेंट कितने मिलते हैं? पेशेंट सीधा सीधा या तो इक्का दुक्का फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस की बात बनी, अन्यथा तो कोई मेल इम्पोर्टेंसी या इनफर्टिलिटी के लेके आते हैं। तो उस हिसाब से जहाँ तक फाइब्रोसिस वाला, मेरे बेटे को भी था, अक्सर होता है कि अगर दवाइयाँ या प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं की गई और जब तक प्रिपल्स को रिट्रैक्ट नहीं किया जाता है ऑन डेली बेसिस, जब उसकी मसाज होती है, ऑयल मसाज होती है, सब होती है, और अगर कोई स्पैग्मा है, कुछ है, उसको हटाना जरूरी होता है, तो होता है। क्योंकि पेशाब तो होती है लेकिन वो रिट्रैक्शन ऑफ प्रिपल्स नहीं होता, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे बच्चे जब पहली जो इनका एक ही पहली संतान होती है, तो माताएं बहुत डरती हैं, तो रिटेक्ट नहीं करती। धीरे धीरे रिटेक्ट करने पर और थोड़ा सा ऑयल का यूज करके वो डायलिटेशन होके वो ग्लांस पेनिस के नीचे चला जाता है। तो ये मैनुअली या इस तरीके से हो सकता है, इसमें कोई दवाई या सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर सर्जिकल जरूरत नहीं पड़ती तो 1 साल से पहले बच्चे को जनरली नहीं करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ ये हीमोग्लोबिन वगैरह देखने के लिए। और अब तो घर चलिए लोकल भी वैसे करता है, लंबा नहीं तो ये थोड़ा अवॉइड करते हैं, बच्चे को डेवलप होने दीजिए। एनीवे, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। हमारे पिलर्स हैं, हमारे पास निशांत शुक्ला साहब हैं, हमारे साथ में दिनेश्वर विपी। सर कुछ बोलना चाहते हैं? दिनेश्वर सर का माइक खुला है। स्वागत है आदरणीय। नमस्कार नमस्कार सर। अभी हम सुन रहे थे सर, काफी अच्छा हम समझते हैं कि हमारे जो भी पूर्व वक्ता हैं काफी एनाटॉमी पर काफी एलोबरेट किए हैं। और ये है कि इसका जो है कि जो टेस्टिकुलर जो तीनों प्री और और पास्ट का जो बताया गया, उसमें एक्चुअल हम लोगों ने भी देखा है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कम ही पेशेंट आते हैं जो है स्पेशली टेस्टिकुलर जो स्पर्मिया के जो केसेज आते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग तो तैयार ही नहीं होता है कि जो है बायोप्सी करावें जो है, लेकिन कुछ लोग बायोप्सी कराता है तो जो है उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने भी देखा कि जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही है वहाँ कुछ संभावना हम लोगों ने देखा कि हुआ जो है, और कुछ जो है सफलता मिली जो है। तो हम लोगों के यहाँ भी जो है अभी हमारे पहले के वक्ता जो कामसूत्र का और आयुर्वेद का जो बता रहे थे कि आयुर्वेद में भी जो है माने एनाटॉमी कहिए, फिजियोलॉजी कहिए, दोनों में मॉडर्न में भी 8 ही दोष एक तरह से बताए गए हैं और आयुर्वेद में भी 8 ही दोष बताए गए। और एनाटॉमी की जो बात है इतनी गूढ़ता से मॉडर्न में जितना आया है उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के यहाँ काफी कुछ मिलता है। जैसे आपने वो संड बताया जो है कि जो है संड का भी आपको केसेज जो है मिलता है जो है। तो ये जो है हम समझते हैं कि इस पर एक्चुअल जो है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब भी हम प्लानिंग करें तो इसको बगैर समझे बगैर जाने जो है अगर करते हैं तो वहाँ बहुत कुछ सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए एनाटॉमी का, और चूंकि आपने ठीक ही बताया कि जो है कि प्रैक्टिस में आने के बाद एनाटॉमी छूट जाती है जो है, और एनाटॉमी जब तक रहते हैं तब तक भी मेल हो या फीमेल ऑर्गन का एनाटॉमी का जो है उस हिसाब से हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं, हमारे स्टूडेंट हो चाहे हम लोग हो जो है। तो इसमें जो है एक्चुअल एनाटॉमी की स्टडी करने की जरूरत है, और एक एक उसमें जो है कि छोटे छोटे भी जो ऑर्गन है, छोटे छोटे भी पार्ट हैं, उनका भी बहुत कुछ रोल है जो है आपको जो है। तो हम समझते हैं कि इस पर गहन और अध्ययन करने की जरूरत है, कंपेयर करने की। इसमें ये बात ये भी है कि हम आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न का जो है जो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, दोनों पढ़ते हैं, और दोनों जब कंपेयर करते हैं तो काफी कुछ समानताएं भी मिलती हैं। और उस समानता के आधार पर हम जो आपको कोई भी दवा का जो है हम प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो ये जो है बहुत। और इसके पहले जो है कि जो प्रक्रिया जो एनाटॉमी तो अपने जगह पर है, लेकिन हम समझते हैं कि जो है कि जो पिछले बार भी जो बातचीत हुआ था कि जो डिजायर है, एरिक्शन है, जो है आपको इंट्रोमिशन है और ऑर्गेज में जो है, तो ये थोड़ा सा अभी हमको भी बड़े बहुत दिन काम करने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन की इसमें एनाटॉमिकल कहाँ माने इन्वॉल्व होता है इसमें, ये थोड़ा सा हमको लगता है कि अगले सेशन में थोड़ा इस पर हम लोग और एलोबरेट करें कि डिजायर में एनाटॉमी का क्या रोल हो जाता है, या मान लीजिए कि जो है इरेक्शन में जो है अभी ट्रॉमा वगैरह की बात बताई गई, ट्रॉमा वगैरह तो जो बात है, लेकिन मानसिक ट्रॉमा का भी हम देखते हैं कि उस पर भी कि मानसिक आघात पड़ता है तो एनाटॉमिकल सब पोजीशन ठीक है, लेकिन मानसिक आघात का भी उस जो है ऑर्गन पर आधार पर असर पड़ता है, और उसका जो है कहीं ना कहीं रिपरकशन जो है कि देखने को मिलता है।
तो इस पर भी हम लोगों को जो है कि थोड़ा सा, और हम समझते हैं कि मैडम कामिनी जी का भी काफी इस पर रोल रहा है, और स्पेशली जो है मेल इनफर्टिलिटी को देख करके, जब इनफर्टिलिटी की बात होती है तो वहाँ हम थोड़ा सीरियस ज्यादा होते हैं। जब इम्पोर्टेंसी की बात आती है तो पेशेंट भी उस हिसाब से नहीं कह पाते हैं और हम भी उस हिसाब से नहीं सोच पाते हैं। तो दोनों का जो है थोड़ा सा जो है आपको कि ये टारगेट ओरिएंटेड जो इनफर्टिलिटी हो जाता है, और जब इम्पोर्टेंसी होता है तो उस टाइम में जो है कि कुछ जो चिंतन मनन की बात है, वो कुछ दवाइयां हम दे देते हैं, कहते हैं कि फायदा होगा, कुछ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ही बता देते हैं। तो इस पर जो है थोड़ा सा हम समझते हैं कि और गहन चिंतन मंथन की जरूरत है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम समझते हैं कि आपका दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि हम समझते हैं कि अगले जो है ये बृहस्पतिवार को इस पर फिर ये होगा, तो इस पर भी हम लोग जो है कोई जो जिनका क्लिनिकल, चूंकि हम लोगों के यहाँ केस कम आता है, जो है आता भी है तो बता दें कि उसको एक्सपोज होने में जो है 2-4 महीने लग जाते हैं। जो है इनफर्टिलिटी के केस में बताया कि थोड़ा जल्दी आदमी असेस कर पाता है, लेकिन इम्पोर्टेंसी के केस में जो है काफी टाइम लग जाता है उसको समझने के चक्कर में। तो इस पर जो हम समझते हैं कि ये टॉपिक्स बहुत अच्छा है, रिलेवेंट है। और आज जो है हम समझते हैं कि आप माने 10% से ऊपर, हम आपको जो 80 में दशक किए थे तो सेंसस डिपार्टमेंट से लिए थे, तो इनफर्टाइल 10% से ऊपर उस टाइम में था। आज तो और रेशियो बढ़ा हुआ है। और इम्पोर्टेंसी का भी हम देखते हैं कि 60-70% युवा कहीं ना कहीं आपको शिकार हैं, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हैं, या कुछ एक्चुअल जो है जो फिजिकल कहिए, एनाटॉमिकल कहिए, जो है कुछ जो है आपको साइकोलॉजिकल कहिए जो है। तो इस पर जो है ये हम समझते हैं कि लोगों को एजुकेट करने की भी जो है, सेक्स एजुकेशन में जो है हम लोग तो कुछ एजुकेट मान लीजिए कि हो जाते हैं, लेकिन आम पब्लिक को भी थोड़ा एजुकेट करने की जरूरत है। धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर। मैं भी इसमें आपकी बात में एक दो बात जोड़ना चाहूंगी। हमारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलता है, काफी पेशेंट्स रहते हैं मेरे पास, तो जी उसमें मेल फैक्टर रहता है। उसमें मैक्सिमम हमारे पास ये आजकल जो आ रहे हैं काफी पेशेंट्स आते हैं एज़ोस्पर्मिया के आते हैं, और जैसे आप सेक्टिनास्मिक बता रहे थे, वो ईडी के पेशेंट भी हमारे पास काफी आते हैं। वो जी कह नहीं पाते हैं, फिर वो फीमेल बताती कि ये दिक्कत है उनको, तो आप थोड़ा सा उनको बता दीजिए दवाई। तो फिर वो हमारे जो कंसर्न एक्सपर्ट है फिर उनकी सलाह लेते हैं कि हाँ सर आप जरा इनको काउंसलिंग कर दीजिए, देख लीजिए ऐसे करके। तो ये फैक्टर भी रहता ही है इसमें मेल इनफर्टिलिटी पर। ये हम धीरे धीरे इसमें जाएंगे। शुरुआत हमने करी है एनाटॉमी से, फिर फिजियोलॉजी, फिर सारा ही हाँ, हमने नहीं मैडम, जी बहुत अच्छा आपका प्रयास जो है हम समझते हैं कि काफी सराहनीय है। इतना जो है डीप जो है